Hello everyone, it's me Sampurna Karmakar, and if you're seeing this face for the first time, don't forget to consider subscribing, but only after watching this video and only if you like. So for today's video, I have a one brand tutorial for you in a very affordable range. Everything is under 250 rupees. It is the brand called Insightcosmetics. If you like this video and if you want to check their products out, I will link everything in the description box. Don't forget to check it out from there. So without any further ado, let's get into the video and see that how I got this look using only one branded products. Let's go. So I am like barefaced. I have prepped my face up and now we'll start with the makeup. सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी आई हैव नेवर यूज एनी ऑफ इनसाइट्स प्रोडक्ट पहले. सो स्टार्टिंग विथ द प्राइमर. पैकेजिंग कुछ ऐसा है और अंदर से ऐसा दिखता है. दिस अ सिलिकॉन पेस्ट प्राइमर, ऑयल फ्री लिखा है. बट में थोड़ा सा लेते हैं एंड बाय द वे इसका नाम है 3-in-1 प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स. ऑलरेडी आई ब्लोट माई फेस, बट अब अगर ऑयल फ्री है तो मॉइस्चराइजिंग भी ज़रूरी है आई गेस. लेट्स सी. बट मैंने सुना है कि इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं. ये अच्छे ही हैं. पता नहीं, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा है. ओके, एनीवेज फॉर फाउंडेशन आई हैव इनसाइट अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन. दिस इज द आउटर पैकेज और अंदर से ये ग्लास बॉटल में ड्रॉपर के साथ है. और आई डोंट नो, आई थिंक अगर अल्ट्रा थिन है तो आई थिंक शेयर कवरेज होगा. ऑल्सो इसका कोई मतलब ज़्यादा शेड्स हैं नहीं, 3 थे आई गेस. और मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स उनके साइट से ऑर्डर करा है. तो आई डोंट नो, दिस इज इन वार्म न्यूड. दिस वाज द डार्केस्ट दैट दे हैड. आई डोंट नो द ऑब्सेशन ऑफ इट्स नॉट वेरी वेल. Impressed. All right, for concealer we have Insight Pro Concealer Palette and this is the outer packaging. और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है. इसके अलग से कंसीलर्स भी थे बट मुझे उनमें अपना शेड समझ नहीं आया. आई हैव आई थिंक दिस शेड दैट विल आई थिंक मैच मी, बट लेट्स यूज दिस एंड सी. और इसमें लाइक इट वाज अ कॉन्टोर एंड कंसील पैलेट, सो मुझे लगा कि दिस वुड बी इनफ. आई विल गो ahead and use this shade as my concealer. Let's see if it matches when I move to a darker one. Okay, not bad. Ooh, nice. बहुत creamy है और I think blend भी हो रहा है. I'll take थोड़ा for my eyelid as well and apply it all over my lid. अब we have to contour, so I'm going to use the darkest one, जो कि ये है. I don't know this. I think this मैं ये दोनों शेड मिला के यूज़ कर रही हूँ इसको contour में. ये बहुत ऑरेंज लग रहा है यार. और इसके अलावा इनके पास कॉन्टोरिंग के लिए कुछ था भी नहीं. The closest that we have. I think I'm gonna do it like this. देखो ऑरेंज तो दिख रहा है बट क्या करें उसमें. Quite happy with it. थोड़ी सी वाइट लग रही हूँ मैं कैमरा में. I don't know why. इसमें ऑरेंज ज़्यादा लग रही हूँ बट या फाउंडेशन was good. कंसीलर भी ठीक है. कंसीलर बहुत अच्छा है इनफैक्ट. फाउंडेशन भी मुझे अच्छा लगा. प्राइमर का मुझे समझ नहीं आया अभी तक. कमिंग ऑन दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द फिनिशिंग पाउडर. फॉर फिनिशिंग पाउडर आई हैव दैट इनसाइट HD फिनिशिंग लूज पाउडर. ऐसे लिखा है आउटर पैकेजिंग. और मेरा शेड है आइवरी. इसके भी 2 या 3 शेड्स थे. एंड बिलीव मी दिस वाज द डार्केस्ट पाउडर. Okay. Oh, nice. एक छोटा सा स्टंट किया जो मेरा काम नहीं है. और तो
feel लूज पाउडर स्किन को ज़्यादा देर तक ड्राई रखता है और पैक्ड रखता है, बट मी बीइंग ड्राई स्किन टाइप आई डोंट प्रेफर लूज पाउडर. मेरा कॉम्पैक्ट से काम चल जाता है. आई वोंट कमेंट ऑन दिस पाउडर मच बिकॉज बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई करा नहीं है. मैं बस बहुत थोड़ा अप्लाई करती हूँ लूज पाउडर अगर मुझे यूज़ करना रहता है तो. इफ़ यू आर एन ऑयली स्किन टाइप, आई थिंक दिस विल बी अ गुड purchase for you in an affordable range. I don't have anything for blush, so what I'm going to do is I have their lipstick from Insight Color Rich lipstick in the shade Wine Room. So I'll take this thoda sa and apply it on my cheeks and blend it. Moving on to the highlighter, I have their Insta Ready Illuminating Highlighter. Outer packaging ऐसा है and I'm in the shade 03 Luminous. Again only 2 to 3 shades. Like whatever I'm mentioning for like जो skin tone के हिसाब से होता है, ज़्यादा shade range था नहीं. So this is how it looks. थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा pinkish undertone है. Let's see. Okay. थोड़ा सा bridge of the nose, tip of the nose यहाँ. Okay, now let's blend this. They have a sponge. Let's try to blend it with that. Okay, nice. The blender works. ये तो गायब हो जा रहा है. बहुत subtle है. So if you are into like highlighters जो blinding नहीं होते हैं and they just give you a little bit of glow. Yeah, I mean this is good. This is nice. Like this one. Yeah. Moving on to the eyes. मेरे पास आईब्रो के लिए कुछ नहीं है, तो what we'll do is go ahead and use the mascara that they have. It is their Insight Mascara. बस इतना लिखा हुआ है इसमें. And this is the outer packaging. Packaging काफ़ी इनकी सारी मतलब पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छे लगे. Nice. It looks really expensive. Okay, this is how it looks. प्लास्टिक का डब्बा है और okay. स्पूली जैसा अगर देखा तो आई थिंक बेटर होता, बट ठीक है. And उस टाइम मेरे को लगता था कि वाओ जीनियस. Pressed. Taking this shade again. What we do here is go back. Yeah, that means the eyebrows. Okay. For eyeshadow palette, उनके पास कोई eyeshadow palette नहीं था. So what I'm going to do is I am going to take their Kajal and create a smoky eye. जिसके बाद I have one loose eyeshadow which I'm going to create a look with. So no cheating here, no applying any other brand product. अगर one brand है, it should be completely one. Okay. So this is the eyeliner. It's their Intense Kohl Kajal. Retractable वाला है and yeah, that's a good thing. Let's just it looks a bit weird now, but let's wait for it. I'm just gonna use a flat brush to blend it. Now I am going to use their multi-use loose eyeshadow. It's in the shade 12 Tuscany, if I'm pronouncing it correctly. Okay, so this is how it looks. A छोटी सा डिब्बा है. I am going to apply this on my just lids. काजल इज नॉट स्मज प्रूफ. वो थोड़ा सा रनी टाइप का काजल है. द लूज आई शेडो इट वॉज गुड. फॉल आउट तो ऑब्वियसली ग्लिटर्स में होता है, इसमें थोड़ा कम है और क्लीन करने पे वो क्लीन भी हो गया इजीली. लेट्स मूव ऑन टू द आई लाइनर. ज़्यादा लाइनर अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज इसके ऊपर आई डोंट थिंक अप्लाई होगा, बट अप्लाई. सो दिस इज देयर लाइनर एक्सप्रेस और Alright, so let's apply some mascara now. How this works. Wand is good.
mascara is doing nothing. Apply my own lashes and do it. Moving on to the lipstick, I have their non-transfer liquid lipstick in the shade Dark Chocolate. This is how it looks. Alright, so it's done. इसको सेकंड में लेते हैं, then we'll see if it will actually non-transfer है या नहीं. Okay, for the makeup fixer, final thing, the makeup fixer, I have Inside Makeup Fixer Spray, long lasting makeup fixer, not sticky and fixer. This is how it looks. Actually, the smell is good. Okay, funny story. It smells like the aftershave lotion. Yeah, it smells like aftershave lotion. I don't know if it's alcohol है कि नहीं, I hope not. Okay, no, but they do have perfume in it, like added fragrance. So, और ये settle भी हो गया बहुत जल्दी. So yeah, I quite like this one. Okay, so I am done with my makeup. It is transfer proof. चलो ठीक है, love the lipstick too. I'll go get dressed up and then see you in the end. Alright, so you have made it till the end, and I will remind you to consider subscribing to my video, and if you have liked this and enjoyed this, don't forget to hit that like button also, and do share it if you want. So that is all for today's video. I will see you next time. Till then, bye.